if we look into the previous year question papers of NORCET exams, एक topic हमेशा constant रहा है in all the NORCET exams, all the nursing exams that can be PGI-MER exam, SGPGI exam, ESIC exam, एक ऐसा topic है जो DSSSB में भी हमेशा पूछा गया है, that is hand hygiene. Now, what is the importance of hand hygiene? Then why it is being asked? एक ऐसा प्रोसीजर जो आपको आना ही चाहिए इफ यू आर अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, दैट इज हैंड हाइजीन, बिकॉज हैंड हाइजीन इज द प्राइम इंडिकेटर, prime measure by which you can break the chain of infection. We can break the chain of infection by just a simple step of hand washing. Suppose you touched a patient and without washing hands, without using a hand rub or alcohol based sanitizer, you touch the another patient. So what are you doing? You are making the other healthy individual also susceptible to the infections that the previous patient had. Okay, so to break the chain of infection, hand hygiene is must, and that is why this has been a great it has been a topic of great emphasis for all the nursing entrance exams, owing to its importance. The importance is so much that you must know hand hygiene if you're preparing for any of the competitive exam, right? So why is hand washing necessary, and what are the types of hand washings we have, and what is the duration of this hand washing and the steps? Okay, everything will be discussed. So what are we going to discuss? We are going to study the types of hand washing, the duration of hand washing, and the steps of hand washing in this video, right? So now what is hand washing? Hand washing is, suppose you are going to wash your hands with a proper technique so as to clean all the areas involved in that. Okay, so that is what we call as hand washing. We have basically two types of hand washing in this clinical setup. First is medical hand washing, and another is surgical hand washing. मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है जिसमें मेडिकली जो कोई भी कॉमन प्रोसीजर जो वार्ड में किया जा रहा है, जब आप तब सोप और वाटर से अपने हैंड्स को वॉश कर रहे हो, जस्ट हैंड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टिल द एल्बोज, व्हेन यू आर क्लीनिंग द हैंड्स up till the level of wrist, that is what we call as a medical hand washing. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मेडिकल हैंड वॉशिंग बोलते हैं. ठीक है, so that is what we call as a medical hand washing. Now what is surgical hand washing? Surgical hand washing किसी भी एसेप्टिक प्रोसीजर से पहले या फिर सर्जरी से पहले, जब सर्जन या फिर जो भी स्क्रब्ड स्टाफ है जब अपने हैंड्स को अप टिल द लेवल ऑफ एल्बो क्लीन करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ सर्जिकल हैंड वॉशिंग. ठीक है, अगर हमें क्लीन प्रोसीजर से पहले पूछा गया कौन सी टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग होती है, दैट इज अ मेडिकल हैंड वॉशिंग. एंड स्टेराइल प्रोसीजर से पहले कौन सी हैंड वॉशिंग होती है? सर्जिकल हैंड वॉशिंग. Okay, now number 2, these were the types of hand washing. Now number 2 is the duration of hand washing. If someone asks you the duration of the medical hand washing, the answer has to be 30 to 40 seconds. Okay, and if they talk about the duration of the surgical hand washing, it has to be 3 to 5 minutes. Okay, and अगर क्लिनिकली किसी ने आपसे ये पूछा कि अल्कोहल बेस्ड हैंड रब की कितनी ड्यूरेशन है, इट इज सम 20 to 30 seconds. तो आपको तीनों टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग के ड्यूरेशन तो जरूर पता होने चाहिए जब आप नॉर्सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो. लेट्स रिवाइज. मेडिकल हैंड वॉशिंग इज 40 to 60 seconds, surgical is 3 to 5 minutes, and alcohol based hand rub is 20 to 30 seconds. Now the next question that you must know is that कि हमें कब alcohol based hand rub use करना है? When your hands are visibly clean, then you are supposed to use a alcohol based hand rub, otherwise you have to go with the soap and water. अगर आपके हाथ विजिबली डर्टी हैं, देन व्हाट आर यू सपोज टू डू? वी आर सपोज टू वॉश आवर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, एंड अगर वो विजिबली क्लीन है तो हैंड सैनिटाइजर कैन बी लाइक यूज्ड, it can be taken as an alternative. ठीक है, so this was something you should know. Next comes the prerequisites of hand washing. So what are the prerequisites that you must remember while doing hand washing? So number 1, there should be no rings onto your hands. आपके hands should be without any rings. There should be no bangles. ठीक है, कोई भी ऐसा ornament आपके hands, wrist और arms पे नहीं होना चाहिए when you're supposed to do the hand washing. Number two, there should be paired up nails. Nails के edges बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए. Nails should be trimmed properly. Proper trimming होनी चाहिए nails की. ठीक है, और कोई भी ring हाथों में नहीं होनी चाहिए. This is second prerequisite of the hand hygiene. If your hands are visibly clean, you may go for an alcohol based hand rub, but if your hands are visibly very dirty, then you have to go with the soap and water. ठीक है, now what are we supposed to do when we are going to wash our hands? Number 1,
Wet up your hands. Number 2, apply ample amount of soap onto your hands. Primarily 2-3 pushes like 5 ml तक हमें सोप लेना चाहिए and we have to smear it up to your hands. ठीक है, जब आप मेडिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हो आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को वेट करना है. नंबर 2, आपको उसके ऊपर सोप को स्मीयर अप कर लेना है ऐसे करके. हमने उसको स्मीयर अप कर लिया. देन यू हैव टू सपोज द 6, सो वी आर सपोज टू डू द फॉलो द 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग. ठीक है. नंबर 1 इज पाम टू पाम. नंबर 2, पाम टू डॉसम. पाम टू डॉसम का मतलब होता है लेफ्ट डॉसम ओवर द राइट पाम एंड राइट डॉसम ओवर द लेफ्ट पाम एंड वाइस वर्सा. ठीक है, वी आर सपोज टू डू इट. नेक्स्ट इज वी आर सपोज टू interlock the fingers. We are supposed to interlock the fingers. Then we are supposed to clean the fingertips by interlacing them. Then you are supposed to clean the thumb in the rotatory manner. And last में fingertips have to be rubbed onto the ऑल्टरनेटिव पाम्स. ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स होते हैं. उसके बाद अपने हैंड्स को क्या कर लेना है, क्लीन कर लेना है वाटर से. एंड ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू लिमिट द इन्फेक्शन ना, ऑलवेज यूज्ड सिंगल यूज्ड टॉवल्स. ठीक है, सिंगल यूज टॉवल्स मतलब आपने अपने हैंड्स को वाइप अप किया, ड्राई किया एंड उसको डिस्कार्ड कर दिया. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टार्टिंग हैंड वॉशिंग. तो आपको सिंगल यूज हैंड टॉवल्स यूज करने हैं टू ड्राई अप योर हैंड्स. ठीक है. सिमिलरली जब आप सर्जिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हो ना, उसमें क्या होता है, वो एल्बोज के लेवल तक होती है. दैट मीन्स जो आपका सूट होना चाहिए, जो स्क्रब सूट होना चाहिए, उसकी जो लेंथ होती है वो अबव द एल्बोज होनी चाहिए. ठीक है. देन ओनली यू आर सपोज टू डू द सर्जिकल हैंड वॉशिंग. ठीक है. ड्यूरेशन इज 3 to 5 minutes एंड इसको हम एल्बोज के लेवल तक क्लीन करते हैं. एंड जब भी ओटी में कोई स्टाफ स्क्रब होता है, सर्जन स्क्रब होते हैं, तब जाके सर्जिकल हैंड वॉशिंग की जाती है. ठीक है. सिमिलर स्टेप्स ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग विल बी फॉलोड व्हेन वी आर यूजिंग अ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब. ठीक है. आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेशनल फॉर यू. To like, share, subscribe to our channel for more educational content. So let me tell you one thing, that this was just an educational video. I am not supposed to remove the rings when I am teaching, right? When I'm teaching you the hand washing, I'm not doing it practically, no. When I am doing it practically, then I should not wear any ornaments. Okay? I hope this video was informational for you. To like, share, and subscribe to our channel for more educational content. Thanks for watching.